વરસાદની રાજ્યમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ રહેશે ભરૂચ સુરત નવસારીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે તો ડાંગ તાપી પોરબંદરમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા ગીર સોમનાથ દ્વારકામાં પણ ભારે વરસાદ રહેશે તો અમરેલી રાજકોટ અને ભાવનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી છે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય રહેતા વરસાદ રહેશે ટફ લાઇન પસાર થતા વરસાદ પડી શકે છે અમદાવાદમાં મધ્યમથી હળવા વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે તો રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે आज की 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक इसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा और जो हेवी रेनफॉल वार्निंग गुजरात रीजन में दिया गया है और सौराष्ट्र कच्छ रीजन में हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है आज के लिए हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में रेड वार्निंग के साथ दिया गया है और कल के लिए मतलब 30 सितंबर के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है थंडरस्टॉर्म के साथ। आज जो गुजरात रीजन में हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है इसमें भरूच सूरत नवसारी वलसाड डांग तापी नवसारी देन वलसाड दमन दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है और सौराष्ट्र कच्छ रीजन में आज जो हेवी टू वेरी हेवी होती है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में जो रेड वार्निंग के साथ दिया गया है वो है पोरबंदर जूनागढ़ गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ऑरेंज वार्निंग के साथ राजकोट अमरेली और द्वारका के लिए दिया गया है हेवी रेनफॉल जाम